Till we're looking at the insert document, we'll look at these functions one by one. So we'll talk about the library routines, and why we're looking at them. So these are the built-in functionalities that are supported by programming language, and then you can use the functionality directly without writing code for them. So जिस तरह आप लोग Python में alien लिखते हो या ये जो left का function है right का function, तो इसमें आप functionality नहीं लिख रहे. You're not writing down the steps. You're just writing down what needs to be done, or then it works. So some functions जो कि आप insert में देखोगे like length, ucase, lcase, substring, etc. So सबसे पहले हम जो mathematically operations की थोड़ा हम बात कर लेते हैं. इसमें पहले mod आ जाता है और div आ जाता है. So यहाँ पे अगर आप mod और div देखो तो ये हमने पहले भी डिस्कस किए हुए. So mod और div, you can write it in the function form or you can write like this. Writing it in the function form is just more consistent. So ये आपको remainder दे देता है और ये आपको quotient देता है without the decimal value. Then you have the random and round. So इनको in fact one by one चल लेते हैं. So yeah, so you have int and you have rand. int क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी integer value को as a real value को integer में convert कर देता है, और it returns the value without the fraction part, and then it doesn't round up or round down. ठीक है, इसमें rounding का कोई use नहीं है. And then rand generates a random number from 0 to the number जो आपने pass in किया, but that number is not included. So when you say rand 87, it will generate the values from 0 to 86, 86.9 to be exact. और अगर आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, you don't want decimal numbers, उसके लिए आप इसको IT में रखते हैं. And then we have the date functions. So date format is assumed to be in this format. Okay, the case पे हम string पे जाते हैं, इसको हम date functions पर. So just a quick recap. Left way, you already know what to do. You pass in the number of characters and you pass in the exact count you need. और वो आपको लेफ्ट साइड से रिटर्न कर देता है. राइट इज द ऑपोजिट. उसके बाद लेंथ का जो फंक्शन है, ये आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता दे. दिस ओनली वर्क्स फॉर स्ट्रिंग्स. ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी है. यू कैन नॉट पास इन एन एरे और एन इंटीजर और एन रीड नंबर है. To upper will convert your single character to uppercase. To lower will convert your single character to lowercase. और इसके बाद yeah, so this is it. अब मिड को देख लेते हैं. मिड के अंदर आप जो भी नंबर पास करोगे, then you pass in the starting position and then you pass in the number of characters, तो वहां से वो substring return कर देगा. So when you pass in A B C D E F G H, you say start from the index 2 and get me 3 characters. So index 2 पे आपके पास B है and starting from B 3 characters are B C D. So you have to B C D return करना है. Then you have num to string. So num to string आपके number को string में convert कर देता है. So this 87.5 will be converted to a string now, and all string functions can be applied on it. And on the flip side, we have string to num. ये आपको किसी भी string को वापस integer form में correct कर देगा. And this only obviously works for the values जो कि number values होती है. So यहाँ पे अगर आप लिखते हो let's say laptop. So if you apply this function on it, laptop will not be converted into an integer. That would be wrong. Then we have isnum. It returns true or false depending if the number is जो भी आप string pass करो उसके अंदर सारे जो है ना वो आपके पास numeric values हैं. So this will return true. But if you pass in 1 2 3 A, so that will return a false. ASC आपकी ASCII value return करेगा. So when you pass in an A, it will return 65. ये ASCII values है. You don't need to memorize these. And then CHR will return the character whose ASCII value you passed. So when you pass in 65, it will return you A. So ये दोनों opposite है एक दूसरे के. ठीक है. So ये तो बहुत simple है. इसके बाद थोड़े से date functions पे आते हैं. So day is used to extract a certain day from a date. आप इसमें date pass करनी है like 4 10 20 2003, and it will return you the day part. Month will return you this mid part, and year will return you the last part. And this again only works for the date data type. इस पे आप कोई integer नहीं भेज सकते like 21 और या -50.7. That's not allowed. ये मैं भी आपको बताता हूँ क्या होती है. ओके, सेट डेट में ये होता है कि यू कैन क्रिएट योर ओन डेट टाइप एलिमेंट. सो अगर आपने एक डेट क्रिएट करनी है लेट्स से 1/1/2021, तो यहाँ पे आप 1 डेट 1 मंथ और 2021 भेजोगे, एंड देन इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द एग्जैक्ट डेट, एंड देन यू विल यूज इट इन योर प्रोग्राम. एंड टुडे विल रिटर्न यू टुडेस डेट. ओके, डे इंडेक्स क्या करते हैं कि इट एक्चुअली रिटर्न्स यू द नंबर ऑफ द डे दैट यू आर लुकिंग फॉर इन अ वीक. और उसमें जो काउंटिंग सिंटैक्स होता है वो होता है 1 आपका संडे होता है, एंड देन इट गोज ऑल द वे टिल 7 जो कि आपको वो बनेगा सैटरडे बनेगा. ठीक है. सो इसमें ये सो व्हेन यू से 9/5/2023, सो अगर आप इस डेट पे जाके डे चेक कर लो एक दफा, इट्स अ ट्यूसडे ऑफ 2023. सो ट्यूसडे आप यहाँ से मैच कर लो, मंडे इज 2, सो ट्यूसडे वुड रिटर्न यू 3. So this is the law. So ये आपके इसमें सारे functions cover हो जाते हैं. And percent this function is used to join two strings. So आपने इस तरह से string को join करना.
तो you will use the sign %. And EOF is end of file, ये वो भी आ गया. Alright, so यहाँ पे इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं. Ask the user to divide two numbers and round them to two decimal places. आपने round use कर लेना है. आपने अगर dice roll simulate करना है. Okay, let's talk about random. Random is very important और इसके साथ हम अभी एक possible question भी करेंगे. This is the one that your seniors got. Not really seniors, बल्कि अगर आप लोगों ने A दिया होता तो आप लोगों को ये question आता है. May June 25, paper 2. So you guys will be solving this with me, and we'll be looking at this question. Very interesting question. Okay. So अब रैंडम क्या कहते हैं, आपको पता है 0 से लेके 30 तक जो है ना ये रैंडम वैल्यू सिमुलेट करते हैं. ठीक है. सो अगर मैं कहता हूँ डाइस रोल सिमुलेट करने, तो व्हेन आई राइट 6 तो इट विल जनरेट वैल्यूज फ्रॉम 0 टू ये 7 आया. सो ये आपको 0 से लेके 6.9 तक वैल्यू जनरेट करके देगा. ठीक है. नाउ आई डोंट वांट, एक तो मुझे ये इंटीजर वैल्यूज चाहिए और दूसरे आई वांट टू स्टार्ट देम फ्रॉम 1. ओके, सो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना टू जनरेट अ वैल्यू बिटवीन रेंज, जनरल एक्सप्रेशन फॉर रैंडम इन अ रेंज, आपने इसके लिए क्या करना होता है कि जो आपका जो स्टार्ट ऑफ रेंज होता है, सो योर रैंडम वैल्यू वुड बी, जो आपके स्टार्ट ऑफ रेंज है प्लस आपने उसमें जो डिफरेंस है आपके स्टार्ट और एंड का, एंड माइनस स्टार्ट, इसको हमने ऐड कर दिया. इसकी लॉजिक अब क्या है? सो दिस एक्सप्रेशन विल आइदर जनरेट विल एट द स्मॉलेस्ट विल जनरेट अ 0, बट जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 1 जो है ना स्टार्टिंग नंबर बन जाएगा. And this in a number will at the smallest generate इसको 5 जो कहेंगे 6. This will at the highest will generate 5. ठीक है. But 5 itself is not enough. So 5 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो we'll get 6. तो इस तरह से आपके पास रेंज आ जाएगी 1 to 6. इसका जो जनरल एक्सप्रेशन ये होता है कि जो स्टार्टिंग रेंज है वहां से आप स्टार्ट करोगे और उसमें आप रैंडम जनरेट करोगे between the difference of n to start. And you can always then get a number between start to end.